ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். வால்மீகி மகரிஷி அருளிய ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்டத்தில் 6வது சர்க்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் சொல்வதாலும் அளப்பரிய பலன்களை பெறக்கூடும். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அத சுந்தரகாண்டः षष्ठः सर्गः रावणगृहप्रवेशः. सनिकामं विमानेषु विषन्नः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः. आससाधात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्. रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमानो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः. रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिः द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्. गजास्थितैर्महात्मात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितम् असंहार्यैः हयैस्यन्दनयायिभिः. सिंहव्याघ्रतनुत्राणैः दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रतैः. बहुरत्नसमाकीर्णं पराध्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्मनं. तृष्यैश्च परमोदारैः तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः. विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः. मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंह्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्च वरचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं. भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा. समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महद्वेष्म महारत्नपरिच्छदं. महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं. लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः. गृहाद्गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमानो ह्यसंस्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः. अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवेवेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्. अत मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः. महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च. वज्रदंष्ट्रस्य च ततां पुप्लुवे स महाकपिः. शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः. तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूतपः. जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम भवनं ततः. रश्मिकेतोश्च भवनं
सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेः भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य विघ्नस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंश्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममानक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादात्तलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् रावणस्योपशायिन्यः ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलः राक्षसीर्विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पतिर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरनोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरितांश्च महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावतसमान् युधिं निहन्त्रून् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः हेमजालपरिच्छन्नाः तरुणादित्यवर्चसः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतिरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च वीरराजात तद्विष्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियोत्थपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्कतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहं
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अतः षष्ठः सर्गः। हरिः ओम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. மகிமை வாய்ந்த சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் சொல்வதாலும் எண்ணற்ற பலன்களை பெற முடியும். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையை பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.